દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિને અકીકનો બાઉલ ગિફ્ટમાં આપ્યો। અકીકના મહત્વ વિશે કચ્છ યુનિવર્સિટીના ડોક્ટર મહેશ ઠક્કરે આપી માહિતી। રશિયાના રાષ્ટ્રપતિને ગત અઠવાડિયે ઇન્ડિયા રશિયા સમિટમાં આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ભેટ સ્વરૂપે અકીકનો બાઉલ ગિફ્ટમાં આપ્યો હતો। ત્યારે લોકોમાં પણ ચર્ચા છે કે આ અકીક શું છે, અકીક ક્યાંથી મળે છે અને ભારત વર્ષમાં આ અકીકનું શું મહત્વ છે। અકીક છે તે વોલ્કેનિક, તે પથ્થરમાંથી બને છે। વોલ્કેનો જ્યારે બહાર નીકળે છે ત્યારે અને જ્યારે આ વોલ્કેનોનું ગરમ લાવા બહાર નીકળીને ઠંડુ પડે છે ત્યારે તેની અંદર જે વોલેટાઇલ્સ રહેતા હોય છે, એટલે કે સિલિકાનું પાણી અથવા તો ફ્લોરાઇડનું પાણી અને ગેસ જામી જાય છે અને ત્યારબાદ તે ધીમે ધીમે અકીક બને છે। વેસ્ટર્ન ભારતમાં 6.5 કરોડ વર્ષ પહેલાં અકીકના જે પથ્થરો છે તેનું ફોર્મેશન બેસાલ્ટની અંદર બની ચૂક્યું છે। કચ્છમાં પણ અનેક જગ્યાએથી અકીક મળી આવ્યા છે। કચ્છની વાત કરવામાં આવે તો કચ્છ જિલ્લાની અંદર પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ છે જ્યાં અકીક મળી આવ્યું છે, જેમ કે ભુવડ, અંતરજાળ, ખેડોઈ, ડગાડા જેવી સાઇટ ઉપરથી અકીક મળી આવ્યું છે। સૌથી વધારે અકીકનો પ્રમાણ કચ્છના નાના રણ પાસેના બેટ પાસેથી મળી આવ્યો છે, જે 12 કિલોમીટર લાંબુ છે અને 1.5 કિલોમીટર પહોળું છે। આ બેટ પર ભરપૂર પ્રમાણમાં અકીક મળી આવે છે। અહીં આજે પણ મોટા મોટા અકીકના પથ્થર સપાટી પર તૂટેલી ફૂટેલી હાલતમાં જોવા મળે છે। આ અકીકના પથ્થરોને હેતુસર વિવિધ આકાર આપવામાં પણ આવે છે। ઘણા આર્કિયોલોજિસ્ટે ભુવડ, ખેડોઈ અને આ બેટની સાઇટ ઉપર કામ કર્યું છે, ઉપરાંત તેના પર પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે। આજથી 4500 વર્ષ પહેલાં હડપ્પન સંસ્કૃતિના જે લોકો રહેતા હતા, ઉપરાંત ત્યારે 4 થી 5 અકીકની ફેક્ટરીઓ પણ હતી। અકીકના પથ્થરો પર જુદી જુદી પ્રોસેસ કરીને તેમાંથી વિવિધ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવતી હતી। અકીક માત્ર કચ્છ પૂરતું જ નહીં, પરંતુ હડપ્પન સંસ્કૃતિના સમયગાળા દરમિયાન સિંધ પ્રાંત, પંજાબ પ્રાંત, હરિયાણામાં પણ અહીંનું અકીક ત્યાં મળી આવ્યું છે। ત્યારે અહીંનું એક અકીક ત્યાં કેમ પહોંચ્યું એ સવાલો પણ ઊભા થયા હતા। માટે માત્ર આજે નહીં, 4500 વર્ષ પહેલાં પણ અકીકનું માઇનિંગ થતું હતું અને પ્રોસેસિંગ પણ થતું હતું। આજે પણ આપણે તે માઇન આજે પણ ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર, સાઉથ ગુજરાતમાં રતનપર, અમરેલી, ભાવનગરના આસપાસના વિસ્તારમાં જોઈ શકીએ છીએ। આજના સમયમાં અકીકનું માઇનિંગ એટલા બધા પ્રમાણમાં થતું નથી, માત્ર લોકલ સ્તરે માઇનિંગ અને પ્રોસેસિંગ થતું હોય છે। આ ઉપરાંત ખંભાતની બાજુમાં આવેલ લોથલની વાત કરવામાં આવે તો લોથલનું જે માઇનિંગ થતું હતું તેમાં અકીક ક્યાંથી આવતું હતું તો ખંભાતની અંદર પણ અકીકની ખાણો હતી અને છેલ્લા 4 સદીથી એટલે કે 16મી સદીથી ખંભાતમાં જે અકીકની ખાણો છે અને અકીકના પ્રોસેસિંગ માટેના જે પ્લાન્ટ છે તે પૂરા ભારત વર્ષ માટે મહત્વનું પ્લાન્ટ માનવામાં આવી રહ્યું છે। કારણ કે જે હડપ્પા સંસ્કૃતિના લોકો જે રીતે અકીકની પ્રોસેસ કરતા હતા એ જ ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિથી આજે ખંભાતમાં પ્રોસેસ થઈ રહ્યું છે। ખંભાતના પ્લાન્ટમાં જે અકીકની પ્રોસેસ થાય છે તે ગુજરાત કે વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાના મહારાષ્ટ્રના વિસ્તારમાંથી જે અકીક મળે છે તેનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવતો, કારણ કે આ અકીકની ઇન્ડસ્ટ્રી એટલી મોટી છે। અહીં જે અકીક મળે છે તે ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં છે, માટે આ પ્લાન્ટ પર 4 થી 5 દેશોમાંથી અકીકનો કાચો માલ ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે છે અને પછી તેના પર પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે। અકીક એક પ્રકારનું સેમી પ્રેસિયસ સ્ટોન છે। જીઓલોજીકલી અકીક સેમી પ્રેસિયસ સ્ટોન છે અને તે પ્રેસિયસ સ્ટોનની કેટેગરીમાં નથી આવતું। આ સેમી પ્રેસિયસ સ્ટોનની પોલિશિંગ કરી તેને આકાર આપવામાં આવે છે, જેનાથી તેની કિંમત વધી જાય છે, પરંતુ તેની કિંમત એટલી નથી જેટલી ડાયમંડ, નીલમ કે પોખરાજની હોય છે। અકીકમાં સુંદરતા ખૂબ વધારે હોય છે અને તેને અલગ અલગ આકાર આપવાથી તેની કિંમત વધી જાય છે। અકીક 25 પ્રકારના હોય છે અને જુદા જુદા રંગમાં હોય છે અને તેમાંથી અનેકવિધ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે જેથી તે સુંદર દેખાય છે। स्टोरी बाय हितेश जोशी, महाशापुरा न्यूज़ चैनल, भूज, कच्छ। अभी मुझे पता चला है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने रशिया का जो प्रेसिडेंट यहाँ मुलाकात के लिए आए थे भारत में, तो व्लादिमीर पुतिन नाम है उनका। उन्होंने एक अगेट का तस्तरी बाउल गिफ्ट में दिया है। तब से ये स्टोरी एक लोगों में इंतज़ारी है कि ये अगेट क्या है और अकीक कहाँ मिलता है और भारतवर्ष में उसकी महत्ता क्या है। तो ये आज आम आदमी की बात रही है। तो जब आपने पूछा है कि कच्छ में कि गुजरात में कहाँ अगेट या तो अकीक का पत्थर मिलता है। अकीक एक वॉल्केनिक रॉक में से बनता है। वॉल्केनो जब बाहर निकलता है तो जब धीरे धीरे उसका गर्मी बाहर निकल के वो जब ठंडा होता है लावा, तो
ठंडा होने के बाद इसके अंदर जो वॉलेटाइल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सिलिका का पानी या तो फ्लोराइड का पानी और गैसेस, वो जम जाने के बाद धीरे धीरे उसमें से अगेट बनता है। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। हम उसको बोलेंगे कि पूरे वेस्टर्न इंडिया में 6.5 करोड़ साल पहले ये सब अकीक का जो पत्थर है वो बेसाल्ट के अंदर जो बना है उसका फॉर्मेशन हो चुका था 6.5 करोड़ साल पहले। लेकिन कच्छ में और गुजरात में ऐसे ही डेक्कन फॉर्मेशन या तो कालमिंट जो पत्थर है उसमें से जो अकीक बाहर निकल के हमको 14 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ऐसी कोई मिट्टी बनी कि जिसमें ये अकीक अलग होके सेडिमेंट में जमा हो गए। तो इस फॉर्मेशन में कच्छ के अंदर हमको बहुत सारी जगह की जहाँ से अगेट मिलता है, जिसमें बुअड़, अंतरजाल, खेरा, जांगर एंड डगाड़ा, ये कुछ साइट है जिसमें से अकीक पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अकीक का जो सेडिमेंट देखा गया है वो मारडक बेट, जो कि लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर एक छोटा सा बेट है जो 12 किलोमीटर लंबा है और करीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। उस मारडक बेट में भरपूर अकीक पाए जाते हैं। अभी इस अकीक को आज भी आप जब जाओगे तब देख पाओगे कि बहुत बड़े बड़े अकीक के पत्थर पूरे सरफेस के ऊपर आपको टूटे फूटे हुए भी मिलेंगे, और कुछ अकीक के पत्थर जिसको पर्पसली उसको शेप दिया गया है। तो जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये किसने शेप दिया है। तो इससे पता चलता है, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, तब पता चला है कि ये साइट मारडक बेट और जो अभी मैंने दूसरी साइट खेड़ोई और भुवड़ बताई, उस सब साइट में से अकीक का प्रोसेस किया जाता था। और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जबकि आज से 4,500 साल पहले जो हमारे यहाँ हड़प्पन लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, उन्होंने यहाँ करीबन 4 से 5 साइट है जहाँ वो अकीक का फैक्ट्री था, और उस अकीक को प्रोसेस करके उसको कार्नेलियन बनाते थे और उसके बीड्स, उसको टम्बलिंग करके उसका बीड बनाते थे, उसके अलग अलग प्रकार की तस्तरी या बाउल और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो सिर्फ कच्छ की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरे भारतवर्ष में, वेस्टर्न इंडिया में जहाँ कच्छ देखा, गुजरात है और सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और हरियाणा, इन सब जगह यहाँ का अकीक वहाँ मिला है। तो उसके लिए भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री भी है कि अकीक का पत्थर यहाँ से कैसे गया। तब जब लोथल के अंदर इसका अभ्यास किया गया तो लोथल में ये जो छोटा सा पोर्ट था, वहाँ से अकीक का पत्थर प्रोसेस करके मेसोपोटामिया तक जाता था। तो ये प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको दिया है कि अगेट आज नहीं पर 4,500 साल पहले भी उसका माइनिंग किया जाता था। आज उनकी पुरानी माइंस पर भी हम देख सकते हैं, सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात में, जहाँ रतनपर है, अमरेली के आसपास, भावनगर के आसपास करीबन 15-20 ऐसी साइट्स है कि जहाँ से अकीक पाए जाते हैं। आज के दिन में अकीक का माइनिंग बहुत कम है और वो लोकल तौर पर लोग अकीक का माइनिंग करके और उसका प्रोसेस करते हैं। लेकिन हम लोथल की बात करें तो लोथल का जो माइनिंग था उसमें अकीक कहाँ से आता था, वो सबसे बड़ी बात है कि खंभात के आसपास, लोथल के कुछ किलोमीटर दूर खंभात है, खंभात के अंदर भी अकीक की माइंस थी। आज खंभात के अंदर पिछले 4 सेंचुरी से, लगभग 16 सेंचुरी से आज तक उसका प्रोसेसिंग प्लांट वो पूरे भारतवर्ष में करके और उसका प्रोसेस करते हैं। लेकिन हम लोथल की बात करें तो लोथल का जो माइनिंग था उसमें अकीक कहाँ से आता था, वो सबसे बड़ी बात है कि खंभात के आसपास, लोथल के कुछ किलोमीटर दूर खंभात है, खंभात के अंदर भी अकीक की माइंस थी।
आज खंभात के अंदर पिछले 4 सेंचुरी से लगभग 16 सेंचुरी से आज तक उसका प्रोसेसिंग प्लांट वो पूरे भारतवर्ष में सबसे अहम प्रोसेसिंग प्लांट माना जाता है। लेकिन वो आज भी जब हड़प्पन करते थे उसी ट्रेडिशनल पद्धति से अकीक का प्रोसेसिंग करते हैं। वहाँ जो अकीक आता है वो आज यहाँ का जो गुजरात का अकीक या तो वेस्टर्न इंडिया में जो महाराष्ट्र में भी कुछ अकीक के पत्थर पाए जाते हैं, वो अकीक आज वहाँ वो लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उनके लिए ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, ज़्यादा माल होना चाहिए। तो आज वहाँ जो अकीक का पत्थर इंपोर्ट होता है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, वो करीबन कई 4 या 5 कंट्री जो साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ है या कुछ अकीक अफ्रीका से भी आता है और उसका प्रोसेस होता है। अकीक एक तरह का सेमी प्रेशियस स्टोन है। जियोलॉजिकली अगर देखा है तो सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। वो प्रेशियस स्टोन की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन भी जब उसका पॉलिशिंग और उसको शेप दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है कि जितनी डायमंड की है या नीलम की है या पोखराज की है, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन की अलग अलग चीज़ें बनने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अकीक में सुंदरता बहुत है। अकीक करीबन 25 प्रकार के अकीक होते हैं। उसमें अलग अलग पैटर्न्स, ज़िब्रा अगेट बोलते हैं, मोस अगेट बोलते हैं, कई प्रकार के कई कलर के अकीक होते हैं। तो इसलिए वो जब उसकी चीज़ें बनाते हैं तो खूब सुंदर लगते हैं।